Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is Saad Hasham and this is Zorain Akhtar। बहुत ही बढ़िया किस्म की वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग ज्यादा अब आपको वेट नहीं करवाते, दस्ती वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक बताएं प्लीज। वीडियो का नाम है बांग्लादेश दी राइजिंग स्टार, क्योंकि ये एशिया का वो मुल्क है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी आपकी फरमाइश की वीडियो पे रिएक्शन दें तो आप उसका लिंक हमें ये भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, कमेंट्स काफी आए थे, तो हम लोग इस वीडियो के रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो अगर आप रेडी हो तो हमें बता दें, बल्कि आप कैसे बताएंगे, हम खुद स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दे आर रेडी। 3 2 1 एंड स्टार्ट। नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी की है, टाइगर बंगाली टाइगर्स, फ्लैग। A land of natural wonders, colorful festivals, and endless possibilities, Bangladesh has a glorious history of resilience and valor. And the essence of this beautiful land can be found in the life and philosophy of one man, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Almost 50 years ago, he liberated us from the shackles of oppression, taught us the true meaning of freedom, and envisioned for us a bright, prosperous future. Now, as the whole nation jubilantly celebrates the birth centenary of that greatest Bengali of all time, the future looks brighter than ever for Bangladesh under the prudent leadership of his daughter, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Thanks to the government's enhanced priority on education, the last decade has seen the literacy rate jumping to 73%. Enrollment in primary schools has jumped to almost 100%. Besides, 14,000 community clinics have brought healthcare to the rural doorstep, rising the average lifespan of people to almost 73 years. Infant mortality has gone down to 31, while maternal mortality rate is now only 1.72 persons per thousand. For 4 consecutive years, Bangladesh has been at the top of the South Asian countries in ensuring gender equality as per the World Economic Forum ranking. The poverty rate has also decreased from around 40% in 2005 to 20.5% in 2019. In the fiscal year 2018-19, Bangladesh's GDP grew by 8.15%, which is one of the highest in the world. At the same time, per capita income has crossed $2,000 from $759 back in fiscal year 2008-9. Our exports have grown to almost $41 billion from $15 billion 10 years ago. Currently, Bangladesh is the second largest exporter of ready-made garments in the world. Meanwhile, our pharmaceuticals, leather products, food processing, and ICT industry are also making their mark at the global stage. Flow of remittance increased from $9.7 billion a decade ago to $16.5 billion in the fiscal year 2018-19. Flow of foreign direct investment has increased by almost 4 times in the last 10 years to reach $3.6 billion. Private sector investment has simultaneously increased by 5 folds in last 13 years, reaching almost $71 billion. Once dependent on food aid, Bangladesh has not only achieved food self-sufficiency, but also emerging as a food exporter. Currently, Bangladesh is the 4th largest producer of rice, 3rd largest producer of vegetables, and the 4th largest producer
of freshwater fish in the world. The power generation capacity has increased by 4.5 times to reach 22,329 megawatts. 94% people in the country now have access to electricity. More than 4,500 Union Digital Centers are bringing digital services to rural doorstep. The total number of mobile phone subscribers has crossed 161 million. 19 million se. Meanwhile, the number of internet users has increased to 96.2 million. After successfully achieving the Millennium Development Goals, Bangladesh is now working relentlessly to attain the Sustainable Development Goals. Bangladesh's unprecedented success is now being recognized by various global entities while earning the country accolades at the world stage. Back in 2015, Bangladesh became a lower middle income country as per the World Bank classification. Goldman Sachs has identified Bangladesh as one of the next 11 countries that has the potential to become one of the world's largest economies in the 21st century. According to HSBC, Bangladesh is likely to become the 26th largest economy in the world by 2030. Meanwhile, PricewaterhouseCoopers projected that Bangladesh has the potential to become the world's 23rd largest economy by 2050. 2050 तक 23rd largest economy. एशिया में मेरे ख्याल पे To सेकंड नंबर boost पे up आते such हैं। huge economic progress, the government has second- also second पे ही initiated है। various mega China, infrastructure projects. वो भी The एशिया country's हाँ, longest third। bridge over the Podda River, Dhaka Metro Rail, Pyra Deep Seaport, Same number पे रहेगा, लेकिन Bangabandhu Space बहुत आगे Satellite, चला जाएगा and the जी। country's first nuclear power plant in Rupur. These are just few examples of such mega undertakings. 100 special economic zones will be established across the country in the next 15 years to produce goods and services worth 40 billion US dollars and to create 10 million jobs. Meanwhile, million 28 jobs. high-tech parks will be constructed Best to bring ICT export to 5 billion US dollars by the year 2021, while creating 2 million jobs. To bring all the modern amenities to the rural people, the government is also implementing the gigantic scheme My Village, My Town, a major promise of its latest election manifesto. Bangladesh has a young, energetic population with 34% of its people aged 15 and below, while more than 65% is of working age. Cashing in on that demographic dividend, Bangladesh now aspires to become a major player in the upcoming fourth industrial revolution. To make this country ready for that transformation, the government has put special emphasis on quality education, technology, digitization, youth, and decent job creation in its latest budget, as it is determined to create jobs for 30 million people by the year 2030. Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. In line with the dreams of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we are aiming to become a prosperous, developed nation and one of the top 20 economies in the world by 2041. Come, join us in our journey as we march beyond the dreams to emerge as the world's next rising tiger. Literally, he is world's next rising tiger. बिल्कुल बहुत 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 ही ग्रेट वीडियो है और मैं कहता हूँ छा ही गए हैं यार कमेंटलेस हमें कुछ अच्छा। भी अल्फाज नहीं बचे हुए। वीडियो ये थोड़ी सी पुरानी है लेकिन आप लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की, इस वजह से हमने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। तो ये जो क्योंकि 2021 के अंदर जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने थे,
जो कुछ पार्क से, टेक्नोलॉजी पार्क से 20 आई थिंक थे, 20 हमने यूट्यूब पे सर्च किया कि हमें कुछ ना 2 3 4 5 मंथ पुरानी वीडियो मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिली। अगर आपकी नज़र में कोई 4-5 मंथ पुरानी वीडियो है रिसेंटली जिसमें न्यू फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में बताया हो कि जो कुछ प्रोजेक्ट इस वीडियो में बताए गए हैं वो चल रहे थे, अभी जीडीपी क्या चल रही है और अभी इकोनॉमी कैसी है बांग्लादेश की, वो सारा हमें डिटेल्स आप काइंडली कमेंट बॉक्स में बताएं। और आई थिंक बांग्लादेश एटॉमिक पावर नहीं है। हाँ, लेकिन जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है उसने एटॉमिक पावर बन जाना, लेकिन उनको जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, उनका किसी के साथ फड्डा ही नहीं है। दुश्मन कौन है उनका? दे स्टैंड फॉर पीस एज वी स्टैंड फॉर पीस। इट्स जस्ट फॉर जो पास्ट में हुआ उसको भाई छोड़ो, पास्ट है। बाकी शेख मुजीबुर रहमान से हमें याद आया, हमारे एक दोस्त का नाम भी है मुजीबुर रहमान, शेख नहीं है वो चौधरी साहब हैं और वकील हैं वो हमारे एडवोकेट साहब हैं, एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब। तो चौधरी भी लगाते हैं, चौधरी भी आगे लगाते हैं। एनीवेज हम बात कहाँ से कहाँ निकल गई। बांग्लादेश की इकोनॉमी और ये जो बता रहे थे राइजिंग टाइगर इट विल बी द नेक्स्ट राइजिंग टाइगर। अब करंटली भी मेरे ख्याल में वो एशिया में काफी अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि पाकिस्तान है एक बहुत बड़े कंट्री है, एटॉमिक पावर है, सब चीजें हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से भी ऊपर जा रहे हैं और हमारी दुआ है कि इस तरह ग्रो करते रहे। एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी कि ये फर्स्ट पे और सेकंड पे राइस प्रोड्यूसर कौन है, और थर्ड पे तो बांग्लादेश है, और उसके अलावा हमें ये बताइएगा कि फर्स्ट पे जो है क्लोथ्स के क्या कहते हैं उसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे कौन है, सेकंड पे अगर बांग्लादेश है तो ठीक है। तो मेरे माइंड में तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है, लेकिन मे बी इट्स नॉट, ठीक है, क्योंकि मैंने गूगल नहीं किया। आप किस लिए यार, आप हमें बताएंगे सही इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बताइएगा, हमें गूगल ना करना पड़े, यूट्यूब प्लेटफॉर्म इस तरह के हमें चीजें पता चल जाए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, उनमें चीजें हम देखते हैं, जो आप फैक्ट एंड फिगर्स बताते हैं हम उनको माइंड में नोट डाउन कर लेते हैं। बांग्लादेश की इसी तरह की वीडियो हमें सजेस्ट करते रहे, हम जरूर यकीन करेंगे, चाहे देर आए दुरुस्त आए। और बंगलू बंधु आप लोग हमारे भाई हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, आप हमारे बड़े भाई हो, हम छोटे, आप मानो ना मानो भाई हम मानते हैं। जो वही बात मैंने कही थी कि यार जो मामलात हुए वो अवाम के साथ नहीं हुए थे, वो हम पैदा नहीं थे हुए, आप पैदा नहीं थे हुए जब हम पैदा नहीं हुए थे तब के मामलात थे। एनीवेज वी लव यू ब्रदर। और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान का हिस्सा होने की वजह से नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग भी एक मुस्लिम भाई हैं हमारे, और हम लोग भी आपके मुस्लिम। तो जैसा कि हमारे रिलीजन कहता है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इसलिए ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, सो दैट्स व्हाई वी लव यू ब्रो, ठीक है। तो अल्लाह करे आप लोग इसी तरह ग्रो करते रहें, हमारी दुआएं आपके साथ है, और हमारे लिए भी दुआ किया करें कि हमारी कंट्री भी ग्रो, क्योंकि हमारा मुल्क जो इतना बुरा चलता जा रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बहुत बुरे, लेकिन इंशाल्लाह हमें एक उम्मीद है, एक होप है कि हमारे इंशाल्लाह हमारा भी एक दिन आएगा, अपना दिन आएगा। हाँ, तो मिलते हैं इसी तरह के पीस के मैसेज के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।